So very good afternoon to all and welcome all to today's session. I'm sure my voice is audible. Just type yes on the chat box. So very good afternoon to all and thank you for the confirmation. So today we will be having the session that is on the option trading strategies, explaining about what we have already done in the option कि पहले हम लोग ने option में क्या सिखाया है. So total we have already done with the 7 sessions and आज हम लोग एक recap करते हैं first of all कि हम लोगों ने like ये सारे sessions में क्या सीखा है. And after that we will be explaining you about the spread strategy क्योंकि सबसे ज़्यादा queries और मेल्स जो हम लोग को आ रहे थे कि दैट स्ट्रेटजीज होता क्या है, स्प्रेड स्ट्रेटजी कैसे डिप्लॉय करते हैं. So that will be touching upon this. I'm having with me Mr. Karan Pai, who is again who is the research analyst and who will be walking you through on the option trading strategies. So first of all, I'm going to take the recap on this. So जो हमारे ये सेशन अटेंड कर रहे हैं यूट्यूब चैनल से और जो अटेंड कर रहे हैं वेबएक्स चैनल से, यू कैन जस्ट टाइप इफ you have already like new to the market or means you are a kind of trader into the market. So just type B. B means beginner, like you are a beginner into this market in options market. या I means options थोड़ा बहुत intermediate है आपकी, that you are a means having the knowledge about the options. So just type if you are new to this options market or you are already trading into the options market. We'll take a 30-second pause here. Also, before starting the webinar, we would like to know, because ये जैसे रोहित ने बताया कि हम लोगों ने ये पार्ट्स जो है पहले ही कवर कर लिए हैं. So हम लोग को बस एक बार बता दीजिए कि is there anything today, of course, our presentation will be limited to spreads, bull spread, bear spread, those kind of strategies. So आपको अगर कुछ query है before we start the webinar, then what we can do is we can just cover those queries first and then go ahead with what we have planned for the day. So in the WebEx channel, we are having the query that some of you are new to this market, and in our YouTube channel, we are having the this that already they are trading into the market. So Karan, let's start the deck actually in the way कि means the already like whatever the things we have covered, we will just replay on that कि क्या क्या अभी हम लोगों ने cover किया है. And after that then we can go ahead into the spread कि कैसे spread deploy किया जाता है, spread में क्या होता है exactly. So at least once we are into the spread directly, so everyone will be on the same page that कि options होता क्या है, because options बहुत ज़्यादा risk है. Simultaneously also I would suggest Karan, if you can take on the technical analysis also part, that is कि trend कैसे देखना है if you are following any kind of like the call right now. So let's say like the Nifty 50 is up by almost 490 points, that is 2% above, 2% ऊपर है आज. And same goes with the Bank Nifty also, which is trading around this 51,119, and that is around 700 plus point means above. So with this, now I'll hand over my session to Mr. Karan Pai to take it forward, and who will going to walk you through about the options trading strategies. Karan, all over to you. Yeah.
Thank you, Rohit, for that. And as I mentioned, as Rohit mentioned, so आज के दिन में if you just look at Nifty, just before we start on, we would like to discuss a bit about what is happening in the index because आज के दिन में काफ़ी एक बड़ी मूव दिखाई दी है एंड अगर हम लोग देखेंगे कि एट दिस पॉइंट क्या चल रहा है इंडेक्स में सो येस्टरडे व्हेन वी हैड आवर एक्सपायरी वेबिनार आपको याद होगा वी हैड कम टू कंक्लूजन दैट समवेयर अराउंड 23,300 23,200 we have a possible support. The OI data भी वही बता रहा था and then also we also had a few Fibonacci retracement levels. So broadly up to 23,100 ठीक है एक सपोर्ट जोन काइंड ऑफ ये बन रहा था आज के दिन में अगर आप देखोगे एंड मैंने ये बात भी बोली थी कि मार्केट में जो है कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ स्ट्रेंथ कल के दिन में दिखाई दे रहा था द रीजन बीइंग उसके ऑन द 19th बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन war we had a bit of sell off and then kal ke din mein we had that Adani thing that was going on and was pushing the market lower. But one thing that I distinctly remember telling is that the zone around 23,700, 23,800 that is going to be a bit crucial. आज के दिन में बेसिकली हुआ क्या है कि वी हैड अ पॉजिटिव ओपन ऑफ कोर्स एशियन मार्केट्स एंड कल के ट्रेडिंग सेशन के जो यूएस मार्केट्स का क्लोज है उसका फॉलो अप हम लोग को यहाँ पर दिखाई दिया एंड देन बाइंग मोमेंटम जो है वो काफी स्ट्रांग रहा है इफ यू सी एज ऑफ नाउ वी आर ट्रेडिंग अप्रोक्सीमेटली 500 पॉइंट्स हायर compared to the previous session close. All in all कुछ एक पॉजिटिव मोमेंटम काइंड ऑफ थिंग बिल्डअप यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है नाउ अगेन the next resistance level that I would be probably looking at is today if we have a close of above 23,800 the next big level comes to somewhere around here that is 24,043 24,100 के पास now this is also multiple touch point level and यहाँ पर अगर आप देखोगे जो 21 day exponential moving average है वो भी placed है and one more thing that was a bit important since the past couple of sessions was कि जो index था that is hovering around the 200 day exponential moving average. So all in all, in the sessions to come, we have to observe how the price reacts around 24,000. वहां से अगर वापस कंटिन्यू हो रहा है ऊपर जाने का देन द नेक्स्ट लेवल ऑन द अपसाइड वुड बी 24 300 24 500 and eventually 24 680 now these levels they feel very far fetched and एक बात मैंने आपको कल भी बोली थी कि देर आर थिंग्स दैट आर आउट ऑफ आवर कंट्रोल जैसे जियो पोलिटिकल एस्केलेशंस हुए या वट एवर एलिगेशंस आर बीइंग पुट on the Adani Group stocks. ऐसे सब situations अगर आ गए then you have to be flexible enough to reconsider your decision. This is what the index has been doing and अगर if I'm not wrong in the previous webinar we had also shown a nifty report wherein the analyst had recommended a spread strategy. So that is what we'll be looking at. But after looking at the comments and what people had to say, there are a few people who are absolutely new to the options market. So we'll quickly run through what are options. अभी यहाँ पर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि derivatives क्या है. So for those of you who are absolutely new to the markets, then what I would say is yeah what I would say is uh, derivatives as the name suggests the prices are derived from something and that something is called an underlying asset अभी हम लोग जब निफ्टी ऑप्शंस या निफ्टी फ्यूचर्स की बात करते हैं so before going ahead can someone confirm that I'm audible and my screen is visible just type in yes अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है बहुत क्लियरली Okay. Okay, great.
So thank you for that confirmation. So ऑप्शंस जैसे मैंने बोला कि दे आर डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स इसलिए उसे कहा जाता है बिकॉज द प्राइसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इज डिराइव फ्रॉम द प्राइस ऑफ सम अदर इंस्ट्रूमेंट दैट अदर इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एन अंडरलाइन एसेट एंड जब भी हम निफ्टी की बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट when we are talking about nifty options we are talking about nifty as the underlying. So going ahead options मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या asset classes है underlying के. Now, options also, just like any other market, is uh, you know yeah, basically bought and sold. मतलब अगर आप देखोगे option market में भी there is a buyer and a seller. So based on that, you can either be an option buyer or an option seller. Now, the benefit of having the opportunity to trade in options is that आप इसे customize कर सकते हो. मतलब हमारे पहले के वेबिनार्स भी अगर आप देखोगे फॉर दोस ऑफ यू हु हैव नॉट सीन द ओल्डर वेबिनार्स my suggestion would be just go through those webinar once and we have actually shown you a mathematical edge of how to look at an option instead of just looking at it as a speculation. So अगर आप mathematically देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन वुड बी द राइट वन फॉर मी, कौन सा स्ट्राइक मेरे लिए करेक्ट होगा, मेरा व्यू अगर एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का है तो मैं कौन सी एक्सपायरी देख लूँ एंड ऑल दोज थिंग्स. एंड देर इज ऑल्सो वन मोर फैक्टर, द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर. अगर आप बाई कर रहे हो एंड सेल कर रहे हो, सो देर इज वन मेजर फैक्टर जो मैं आगे भी वेबिनार हमारे वेबिनार में कवर करूंगा. So, options can benefit from either a bullish move, a bearish move, or a sideways move. So, जो मैं अभी बोल रहा था कि there is one factor that can actually distinguish between that can distinctly distinguish between a buyer and a seller. So that is वो sideways market का part आता है. That is the time value. I'll tell you how individual factors affect. The time value affects a buyer and a seller in a different way. देन वॉलेटिलिटी अगर रहेगी तो आपको कैसे बेनिफिट होगा, दैट इज व्हाट विल बी कवरिंग हियर. एंड देन एज मैंने बोला कि अगर आपके पास ऑप्शंस अगर आप ट्रेड कर सकते हो, यू कैन क्लस्टर मल्टीपल ऑप्शंस टुगेदर एंड क्रिएट प्रोबेबली अ कस्टम a completely custom view on the underlying. And then define risk for the buyer, because जैसे आप सभी लोग को पता होगा, assuming कि you people know at least the ABC of the market. So जब भी आप option purchase करते हो, you pay a premium. That premium, your loss is limited to the premium if you are an option buyer. And then there is high potential return due to leverage. Abhi, now this thing you have to be very careful. This high potential return तभी ही होगा अगर ऑप्शन आपके फेवर में चले, एंड अगर नहीं चलेगा देन थिंग्स कुड गो साउथ. Now, types of options, I'm assuming everybody knows it. Call option gives you the right to buy. For example, I am purchasing a Nifty 2500 call, sorry, 25,000 call from Rohit. So basically, market कहीं पे भी हो, expiry दिन पर I have the right to buy the underlying asset from Rohit. In this case, Nifty at 25,000, irrespective of where the market is. पुट्स में मुझे बेचने का राइट मिलता है अगर समझिए कि कुछ दिन पहले मैंने 25,000 का पुट परचेज किया है रोहित से. सो मुझे राइट है कि मैं 25,000 पर ही निफ्टी बेचूं irrespective of where the underlying is trading at the moment. Then there are a few terminologies that needs to be covered. So one is the strike price, premium, expiry date. So strike price, जब मैंने बोला कि 25,000 का कॉल में परचेज कर रहा हूँ, that is basically the strike price. प्रीमियम की अगर मैं बात करूँ कि 25,000 का कॉल परचेज करने के लिए देयर इज एन अमाउंट दैट यू हैव टू पे, ठीक है, कुछ 150 200 व्हाटएवर इट इज बेस्ड ऑन where the current market price is, what the expiry is. So that is basically the premium that you pay. And then there is an expiry date जैसे मैंने बोला कि ये जो आप ऑप्शन कर रहे हो, that is basically a contract, a financial contract. सो एवरी अदर कॉन्ट्रैक्ट इसका भी एक टर्म होता है उसके जिसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई वैल्यू नहीं होता. कि से फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेलिंग कि ये महीने का मेरा व्यू है कि ये निफ्टी यहाँ से ऊपर या नीचे जाएगा, उस बेसिस पे अगर मैं एक पर्टिकुलर कॉल या पुट परचेज करूँ फॉर दैट पर्टिकुलर मंथली एक्सपायरी, या for that particular monthly expiry. So ऐसा होता है कि after that particular expiry I do not have the right to either buy or sell based on what I purchased.
देन ऑप्शन मनीनेस की हम लोगों ने बात की है, एंड अगर आपके पास हमारा एप्लीकेशन हो तो वी हैव एक्चुअली बिन डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, उसमें भी हम लोगों ने मनीनेस के बारे में बात किया है. सो मनीनेस आपको ये बोलता है कि अगर इफ आई वॉज टू यू नो एक्सरसाइज द ऑप्शन राइट नाउ, विच इज नॉट पॉसिबल इन इंडिया, बट अगर मैं ये ऑप्शन अभी एक्सरसाइज करूँ तो मैं कितने प्रॉफिट या कितने लॉस में रहूंगा. सो बेसिकली अगर आप देखोगे ऑप्शन का, देर इज ऑलवेज एन इंट्रिंसिक वैल्यू एंड अ टाइम वैल्यू. करेक्ट. इंट्रिंसिक वैल्यू वो होता है जो उसका एक्चुअल वैल्यू हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉल्स and the current market price of Nifty is say 25,000, and if I'm holding a 24,000 call, can someone tell me what is the intrinsic value of that option? I'll repeat my question again. So I am holding a 24,000 call when the market is trading at 25,000. Can someone tell me what is the intrinsic value of the option? चलो एक और मैं आपको हिंट देता हूँ. द प्राइस ऑफ द 24,000 कॉल दैट आई हैव इज 1100 rupees. एंड देन आई ऑल्सो ट्वीक द क्वेश्चन टू दिस कि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है, टाइम वैल्यू कितना है. एक्सपायरी को और से 10 दिन है बाकी. The difference, okay, you're quite close enough, but the difference of what? Because I've added one more point to it कि the option price is currently at 1100. So let us keep this a dialogue. Let us not make it one way. So हम लोग दोनों बात करेंगे. I'll keep asking you questions, and you guys keep responding to it. Correct. You are correct in a way, but अगर मैं यहाँ पर difference लूँ, it is coming at 1,000 rupees. So, as Siri is participating in this webinar, I request everyone who is attending this webinar from our WebEx channel and from our YouTube channel, request you to please go ahead and type in the chat box whether it's a right or wrong. We are here to rectify you, because market में एक बार मैं गया and market में जाके I don't have to burn my money. So before going into the market, it's very much important to understand the key concept कि क्या क्या होता है exactly, options कैसे work करता है, how the strike price works, how the ITM, ATM and OTM calls works actually. So just keep typing on the chat box. So Sri जो आपने लिखा है, that is quite right, but then there is also something called as a time value. Correct. So ITM option में भी अगर मैं देखूंगा, there is the time value factor is there, but it is quite small. So अगर मैं OTM अगर मैं वहीं पर देखूँ या ATM अगर मैं देखूँ, ATM में भी टाइम वैल्यू कंपेरेटिवली शॉर्ट होता है. सबसे ज़्यादा टाइम वैल्यू जो होता है वो आपको OTM में रहता है. बिकॉज आपका जब एज अ कॉल बायर या पुट बायर जब भी आप परचेस करते हो से OTM कॉल, करेक्ट, जो भी आप वैल्यू दे रहे हो वो दैट इज इन एक्सपेक्टेशन कि बाय मंथ एंड या बाय एक्सपायरी ये जो मैं पोजीशन ले रहा हूँ वो मेरे फेवर में जाएगा. सो बेसिकली यू आर पेइंग फॉर दैट टाइम पीरियड, सो दैट इज बेसिकली टाइम वैल्यू. So based on the intrinsic value, we determine whether an option is ITM, ATM or OTM. Correct. अभी यहाँ पर we have actually mentioned ITM, OTM and ATM for both calls and puts. What I would suggest is either take a screenshot of this and go through it, because we are quite short on time and we would like to take things ahead. Now coming on to option strategies for all those new traders. ठीक है, जिन लोगों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज करना पसंद नहीं है, या those of you who just want to go long either a call or a put, so this is something that might interest you. So एक सिंपल स्ट्रैटेजी अगर मैं बोलूँ तो ऑप्शंस का अगर आप देखोगे इन जनरल दे आर कॉल्ड एज नॉन लीनियर डेरिवेटिव्स. Now if someone can tell me what a linear or a non-linear derivative is. I know this is a bit too complicated, but
आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू पार्टिसिपेट. क्या आपने ये पहले सुना है लीनियर डेरिवेटिव, नॉन लीनियर डेरिवेटिव? ओके, कोई बात नहीं. आई विल टेक द डेरिवेटिव बोलता हूँ, करेक्ट. सो द डेल्टा इज ऑलवेज +1 और -1. प्लस सॉरी, इट इज ऑलवेज 1, कि मतलब अगर मार्केट 1 रुपए से ऊपर जाएगा मेरा अंडरलाइन 1 रुपए से ऊपर जाएगा, अगर मार्केट 1 रुपए से नीचे आएगा मेरा अंडरलाइन 1 रुपए से नीचे आएगा. सो बट यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑप्शन में, व्हेन यू आर लॉन्ग अ कॉल ऑप्शन, यहाँ पे आप देखो द पे ऑफ इज नॉट क्वाइट लीनियर, इट्स नॉट क्वाइट स्ट्रेट. एक पॉइंट के बाद इट गोस पॉजिटिव एंड इट इज स्ट्रेट, बट अगर एक पॉइंट के नीचे अगर आप देखोगे इट इज फ्लैट. Why? Because मैंने ऐसे थोड़े टाइम पहले ही बोला था कि when you're long an option, your loss is limited to the premium that you have paid. That is why the maximum loss you can incur when you're in a long call option, when you have a long call option, is the amount of premium that you have paid. ये जो difference है, this is basically the premium that you have paid. This is the amount of loss that you're making in this position is basically the premium that you have paid. But once the market starts going in your favor, आपका जो payoff scale है वो positive हो रहा है, correct? And beyond one point, ये point basically क्या है? It is basically the strike price plus the premium that you have paid. उसके ऊपर जो भी आएगा, correct, that becomes your profit. Because अगर आप समझिए 25,000 का आपने कॉल परचेज किया है when the underlying is trading at say 24,900, and वो कॉल परचेज करने के लिए आपने स्पेंड किया है 100 रुपीज. So that is a cost of acquisition. So आपका ब्रेक इवन कब आएगा? Because say, okay, I'll put it to you in this way. 25,000 का आपने कॉल परचेज किया at say 100 rupees, correct? And for you to be in favor, for the call to end ITM या for the call to get ITM, आपको एक 100 रुपीज की मूव चाहिए. सॉरी, वो ATM हो जाएगा. आपको ITM अगर उसको करना है तो मिनिमम 101 रुपीज की मूव चाहिए. ओनली देन योर कॉल विल बी ITM. एंड उसके ऊपर जो भी जाएगा देन योर प्रॉफिट्स विल एक्चुअली स्टार्ट कमिंग इन. सो what I'm telling you is, जब भी आप 24,000 का कॉल परचेज कर रहे हो when the underlying is at 23,900, 100 rupees move will move the option by a very small margin. That is the point where your delta, अभी मैं okay, I'll not get into delta because आगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे. So basically the strike plus the premium that you have paid is the break even. Anything above that is when your profit starts. सेम थिंग विथ पुट्स. तो पुट में ओनली डिफरेंस इज दैट ये जो ऊपर का पार्ट है वो आपका फ्लैट होगा. सॉरी, ये as the market goes down आपका आपको प्रॉफिट होगा. And if the market goes up, the your losses are limited. Because put में कैसा है? Put में if the market goes down, your put value will increase. It is just the mirror image of this thing. Then या सो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है, दिस इज अ लॉन्ग पुट स्ट्रैटेजी. अभी यहाँ पर एंड ये ऊपर वाले कॉल में अगर आप देखोगे दे लुक वेरी सिमिलर. आई मीन दे लुक लाइक अ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. द रीजन बीइंग योर पुट्स विल स्टार्ट प्रॉफिटिंग व्हेन द प्राइस ऑफ द अंडरलाइन गोज डाउन. सो ये एक्सेस जो यहाँ पर हम लोगों ने बनाया है, जो यहाँ पर दिखाया है, that is basically your price, and this is the amount of profit and loss you'll be making. So जैसे जैसे मार्केट आपका नीचे जाएगा वैसे वैसे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा. जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाते जाएगा वैसे वैसे आपका आपका लॉस मतलब आपका प्रीमियम ये होगा, मतलब द लॉस दैट यू आर मेकिंग विल बी लिमिटेड टू द प्रीमियम दैट यू पेड. सो जैसे जैसे मार्केट अगर आपका नीचे जा रहा है एक पॉइंट ऐसे आएगा वेयर योर स्ट्राइक प्राइस के पास आएगा एंड देन आपका जो प्रीमियम है वो लूज होगा. मतलब योर लॉस जो है वो आपका प्रीमियम पेड तक हो जाएगा. नाउ कमिंग ऑन टू ऑप्शन ग्रीक्स. अभी जब मैंने पहले आपको बोला था कि ऑप्शंस को आपको मैथमेटिकली देखना है, करेक्ट. सो ऑप्शन ग्रीक्स आर द पॉइंट वेर यू स्टार्ट लुकिंग एट ऑप्शंस फ्रॉम अ मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू. व्हाई? बिकॉज सी, जैसे मैंने बोला कि अंडर डेरिवेटिव्स की जब भी हम लोग बात करें तो द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द प्राइस ऑफ द सॉरी द प्राइस इज डिटरमाइंड और डिपेंडेंट ऑन द प्राइस ऑफ द अंडरलाइन, करेक्ट. या थैंक यू. सो ये अगर जब भी हम लोग when we dig deep into the calculations and all those things, black and Scholes में अगर आप जाओगे, not something that I would recommend, but एक basic understanding होना आपको ज़रूरी है कि जब भी हम लोग कॉल की बात कर रहे हैं, पुट की बात कर रहे हैं, डेल्टा कैसे आपको मैटर करता है, गैमा कैसे आपको मैटर करता है. सो
one thing I would like to confirm is my pace okay? Do I need to go fast? Do I need to go slow? जस्ट आपका जो भी फीडबैक है प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स. ठीक है, इन द मीन वाइल आई जस्ट कंटिन्यू. सो जब हम डेल्टा की बात करते हैं, डेल्टा हम लोग को ये बताता है कि हाउ सेंसिटिव इज द प्राइस ऑफ एन ऑप्शन व्हेन यू कंपेयर इट टू द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग असेट. सो मुझे डेल्टा ये बताएगा कि अगर मेरा अंडरलाइंग 1 रुपए से मूव होता है तो मेरा ऑप्शन प्राइस कितने से मूव होगा. So whenever you're talking about a call, the delta is always positive. It can be either yeah, thank you so much. So your delta can either be zero कि मतलब एक ऐसे पॉइंट आएगा where the option price मतलब आपका अंडरलाइन कुछ भी मूव हो जाए, your option price will not be affected by much. एंड एक होता है आपका पॉजिटिव डेल्टा. पॉजिटिव डेल्टा मतलब एज जैसे जैसे आपका अंडरलाइन प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, योर ऑप्शन प्राइस इज ऑल्सो going accordingly based on whether you have a call. We'll take the example of a call. So जब मैं बोलता हूँ कि डेल्टा मेरा पॉजिटिव जा रहा है, मतलब माय ऑप्शन प्राइस इज रिएक्टिंग पॉजिटिवली टू एवरी सिंगल रूपी पॉजिटिव मूव इन दी अंडरलाइन. करेक्ट. सो इसका एग्जांपल के साथ मैं आपको बोलता हूँ. से फॉर एग्जांपल निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 23,000. मेरे पास 23,100 का कॉल है. करेक्ट. जैसे ही मेरा अंडरलाइन से 23,050 हो जाता है, माय कॉल वैल्यू विल इंक्रीज, बट इट विल इंक्रीज बाय अ वेरी स्मॉल मार्जिन. व्हाई? बिकॉज माय डेल्टा इज नॉट 1, इट इज स्लाइटली, आई मीन इट्स क्वाइट बिलो 1 बट इट इज अबाउ 0. सो मैं हो सकता है कि मेरा डेल्टा 0.3 हो या 0.4 हो. 0.4 मतलब क्या है? फॉर एवरी सिंगल रूपी मूवमेंट इन माय अंडरलाइन, माय ऑप्शन वैल्यू विल मूव बाय 40 पैसा. So अगर से फॉर एग्जांपल निफ्टी गोज फ्रॉम 23,000 टू 23,001, हो सकता है कि मेरा ऑप्शन प्राइस वुड गो अप बाय से 40 पैसा, और उसमें और भी फैक्टर्स हैं, बट हो सकता है कि माय ऑप्शन प्राइस विल एक्चुअली मूव पॉजिटिव, विल मूव अप बाय 40 पैसा. पुट में इसका एग्जैक्टली उल्टा है. पुट में द डेल्टा हैज टू बी नेगेटिव बिकॉज योर पुट वैल्यू गोज अप when your option when your underlying is actually falling. So अगर आप देखोगे पुट का क्या सिनेरियो है. से फॉर एग्जांपल वी आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू गो डाउन एंड हम लोगों ने 23,000 का पुट परचेज कर लिया है व्हेन आवर अंडरलाइंग इज एट 23,000. करेक्ट. सो फॉर एवरी सिंगल वैल्यू विल गो अप. से फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जो 23,000 का पुट है परचेज किया है एट 100 रुपीज. As and when the market moves below 23,000, every single tick the market takes below 23,000, there will be a positive reaction in my put prices. So that is why the delta of put option is always negative. It is 0 to -1, and delta of call option is 0 to 1 because my call option will react positively to every single positive change in the underlying, and my put option will react positively to every single negative change in the underlying. एंड ऑफ कोर्स डीप ओटीएम कॉल्स या पुट्स जो भी है उनके डेल्टा जीरो होते हैं बिकॉज अभी से फॉर एग्जांपल अंडरलाइंग इज ट्रेडिंग एट 23,000 एंड आपने 27,000 का कॉल लॉन्ग किया या 20,000 का आपने पुट लॉन्ग किया, उसमें मूवमेंट होगा ही नहीं बिकॉज देयर इज अ मैसिव डिफरेंस इन द अंडरलाइंग प्राइस एंड द स्ट्राइक प्राइस. सो उसमें मूवमेंट ज्यादा आपको आएगा ही नहीं. सो कमिंग ऑन टू gamma now, I'll just check if we have some more time. Yeah. So what I'll do is I'll quickly rush through the Greeks part, and then we'll move on to the yeah, and then we'll move on to the strategies part. And strategies, I'll not be explaining. So there is one question from our YouTube channel. या सो सी जो मैंने एटीएम ओटीएम आईटीएम आपको समझाया था, करेक्ट. एज एंड हाउ द कॉल और पुट कम्स क्लोजर शोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑप्शन एक्सपायरिंग आईटीएम. करेक्ट. सो अगर से मेरे एक्सपायरी के लिए एक दिन भी बचा हो, सो देर इज नेवर अ 100% गारंटी कि मेरा ऑप्शन जो है वो 100% आईटीएम आएगा.
things can go wrong. We saw what happened with we saw what happened yesterday, we saw what happened day before yesterday. So देर इज नेवर 100% गारंटी कि आपका ऑप्शन आईटीएम होगा, सिर्फ एक्सपायरी के आपको पता चलेगा कि ओके हो गया है. सो वॉट यू आर टेलिंग इज करेक्ट. जब भी हम लोग पुट की बात करते हैं, द क्लोजर द ऑप्शन गोज टू -1, द faster your put values increase. But then there is a caveat, there is also something called as vega, correct? So there are also other factor, which is another factor that affects the price of an option. So there are also other factors which determine the speed at which your option prices move. ये तो एक बेसिक रिलेशन है. अभी गैमा जैसे आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पर, देर इज ऑल्सो गैमा हियर विच एक्चुअली शोज हाउ सेंसिटिव द डेल्टा इज टू द चेंज इन द प्राइस, which is basically a second order calculation. So what we'll do now is okay, so we'll pause for a bit and we'll pause for a minute or so, and किसी को कुछ query है just up to delta and gamma, please put it in the chat box. So I think like my team has run the poll. That is, have you subscribed to our YouTube channel yet? So if you have not subscribed it, then do like and subscribe our YouTube channel so that you should not miss the upcoming webinars, which is closely like very much important. And next Tuesday, do remember that we are having the webinar that is on commodities, that will be covering on like much more important topics, and that will be the chapter 4. So request you to do like and subscribe our channel so that you can get the proper notifications from the YouTube itself and from our side. Yes guys, and वो जो webinar होगा थोड़ा important होगा, because we'll be discussing about what are the main things that you need to know before getting into the commodities trading business. So I'll go ahead. So अगर मैं एक और there are three more Greeks that need to be calculated. So I mean that need to be explained. So one is gamma, जो मुझे बोलता है कि मेरा डेल्टा क्या पेस से चेंज होगा बेस्ड ऑन व्हाट माय अंडरलाइंग इज डूइंग, करेक्ट? बिकॉज जैसे मैंने बोला आपको कि एज एंड व्हेन द ऑप्शन गेट्स क्लोजर टू 0.5 आपका ऑप्शन प्राइस जो है थोड़ा एक्सपोनेंशियली मूव करना स्टार्ट करेगा. बट एक ऐसे पॉइंट आता है जहां पर डेल्टा जो है वो भी एक्सपोनेंशियली मूव करना स्टार्ट करेगा. Say for example, there is a very fast movement in the underlying, correct? So the pace at which the delta is changing is going to be different than a regular day. अगर समझिए वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई, या यू नो बिकॉज ऑफ एनी एक्सवाइजेड रीजन आपका, या तो फिर मार्केट एकदम फास्ट एक डायरेक्शन में चल गया, then the pace at which the delta changes also will change, and उसका जो measure होता है that is called gap. जैसे आज ही मार्केट अपना रन हो गया ऑलमोस्ट Yeah. 600 पॉइंट्स. या सो आज के दिन में अगर आप ऑप्शंस का सुबह से अगर आप डेल्टा वगैरह देख रहे हो, ऑप्शन के ग्रीक्स अगर आप कैलकुलेट कंटिन्यूसली चेक कर रहे हो, यू वुड हैव सीन एक पर्टिकुलर ऑप्शन का डेल्टा क्या पेस से मूव हुआ है. सो दैट इज बेसिकली व्हाट योर गैमा टेल्स यू. नेक्स्ट इज थीटा. सो रिमेंबर जब भी मैं ऑप्शंस के बेसिक्स के बारे में बात कर रहा था, मैंने बोला था देयर इज वन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इन ऑप्शंस दैट अफेक्ट्स यू नो द बायर एंड द सेलर. सो दैट इज थीटा. सो थीटा बेसिकली बोलता है कि हाउ सेंसिटिव माय ऑप्शन वैल्यू इज विथ रिगार्ड्स टू द टाइम टू एक्सपायरी. सो एक बात यू नो वन ऑफ माय कलीग्स हैड टोल्ड मी, सी थीटा इज बेसिकली लाइक लाइफ, करेक्ट? लाइफ ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज as time passes by, जो हमारे पास टाइम है, because we have a limited time, correct? So as time passes by, every day passes by, we have lesser number of days to live. So that is basically theta. So theta हम लोग को ये बोलता है कि अगर ऑप्शन का जो वैलिडिटी है वो एक महीने का है, correct? So for every passing day, what is the value that my option is losing? Why would it lose value? Because as every day passes by, the probability of my option ending keeps falling down. Say for example, आपके पास 10 दिन है एक्सपायरी के, एंड 10 दिन में आप 100 पॉइंट की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट नहीं हुआ. एक दिन गया, 9 दिन में 100 पॉइंट की मूवमेंट, द प्रोबेबिलिटी कम्स डाउन. 8 दिन में 100 पॉइंट की मूवमेंट, प्रोबेबिलिटी कम्स डाउन. एक दिन मूवमेंट आ गया, सो 7 दिन में 75 पॉइंट्स की मूवमेंट, द प्रोबेबिलिटी स्लाइटली गोज हायर बट इट्स स्टिल डाउन. सो दैट इज बेसिकली डीके. मतलब बेसिकली जो हम लोग बोलते हैं गल गया, ऑल दोस टर्म्स दैट यू माइट हैव हर्ड, दैट इज बेसिकली डीके. एंड देन वी हैव वेगा. सो आज के दिन में आपने जो देखा है दैट इज बेसिकली वोलेटिलिटी एक्सपेंशन. वोलेटिलिटी एक्सपेंशन मतलब से अगर मार्केट में बड़ी मूवमेंट आई, द पेस एट विच द ऑप्शन प्राइस चेंजेस इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज, करेक्ट?
So that is basically Vega, how sensitive the options value is with respect to volatility. So that is basically Vega. So now we'll quickly move on to the option strategies. So we'll first off like to show you a derivative report that was discussed yesterday. Just give us a second. I'll just stop sharing my screen. So meantime, if you have any queries, anything, then you can put in the chat box. So what Karan mentioned today about the theta, so theta plays the very important role if you are a buyer into the market. If you're a seller, then of course that is means there is no problem at all. But if you're a buyer into the market, then theta plays the major role actually here. Now talking about the theta only here, that is I purchased the call. That is I'm not recommending here. This is just for the education purpose. Now I purchased the call in the morning of 24,000 at 99 rupees, and I mean जो call था 24,000 का, that went up to like means 173. But I thought like okay, looking at the trend, I saw that okay शायद ये particular means 24,000 cross कर सकता है. At that time the market was trading around this 24,850. But right now if you see जब वो 850 पे 850 860 पे था, then वो प्रीमियम चल रहा था उस समय, that was around this 173 175 के आसपास. But right now if you look at the 24,000 premium, that is trading around this 157, and means जो means like Nifty 50 है वो that is trading around this 23,936. Now हर एक को ये क्वेरी रहता है कि that okay Nifty 50 तो चल गया है मेरा, that is already like is near to the 24,000, बट मेरा प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ रहा है? दिस इज बिकॉज अबाउट द थीटा, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में परचेज किया, अभी क्या इवनिंग आ गया, दैट इज आफ्टरनून, दैट्स अ मार्केट क्लोजिंग आवर्स. सो दैट्स व्हाई थीटा एक टाइम देके प्लेस करता है कि दैट इज नेक्स्ट वीक इज द एक्सपायरी, दैट इज ऑन थर्सडे इज द एक्सपायरी, एंड दैट्स व्हाई लाइक दैट थीटा प्लेस हियर द रोल कि दैट जो भी आपका प्रीमियम है वो श्रिंक होता रहेगा. बट इफ यू आर अ सेलर इन दिस केस, then of course if the premium gets zero, then ultimately like you're in a win-win situation, because the seller receives the premium and the buyer pays the premium, and so buyer is having the limited loss with the unlimited profit, एंड जो सेलर है उसके पास अनलिमिटेड लॉस है विद अ लिमिटेड प्रॉफिट. Yeah, so as you guys can see on the screen, ये जो रिपोर्ट है ये वीकली ऑप्शन रिपोर्ट है निफ्टी का, एंड ये कल पब्लिश हुआ था, दैट वाज ऑन द 21st. Okay, so there was this strategy that was recommended, bull call spread. Correct. So view bull call spread का कब होता है? When you have a moderately bullish view. What do you mean by moderately bullish? यहाँ पर अगर आप देखोगे द मैक्सिमम अपसाइड, यहाँ पर आप कैसे देख सकते हो मैक्सिमम अपसाइड का? बिकॉज देर इज ऑल्सो अ कॉल सेल along with a call buy. करेक्ट, 23,750 का था. मतलब द एनालिस्ट व्हेन रिकमेंडिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी might have thought कि हो सकता है कि यहाँ से रिवर्सल आ जाए, बट देन द अपसाइड माइट बी कैप टू 23,800 23,750 काइंड ऑफ लेवल्स. ओके, या so see, delta and gamma, explaining them with an example is a very difficult task. So what I would suggest is जब भी आपको डेल्टा एंड गैमा वगैरह पे कुछ आपको अगर रिसर्च करना है, माई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन वुड बी लाइव मार्केट में उसको ट्रैक कीजिए. सो आपको पता चलेगा कि एक डेल्टा कैसे काम करता है, गैमा कैसे काम करता है. So I'm not sure if there are any free softwares that do that, but then there are a few softwares that certainly do it, and I know it. But एक एग्जाम्पल से उसे एक्सप्लेन करना, इट्स अ बिट ऑफ अ डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज थिंग्स चेंज वेरी फास्ट एंड ऑप्शन ग्रीक्स उसको रिएक्ट करते हैं. सो एक बेस लेना या बेंचमार्क लेना एंड देन कंपेयरिंग दैट इज अ बिट ऑफ अ डिफिकल्ट टास्क. देन कमिंग ऑन टू दिस स्ट्रैटेजी, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे 23,500 का कॉल परचेस किया गया था, एंड 23,750 का कॉल सेल किया गया था.
Okay. Now, the reason that particular analyst has done that is because his expectation was that the market would go about 23,500, which it did today. But he or she also thought that the upside might be capped beyond 23,750, 23,800. So why would someone do that? So this is a situation. यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि आप अगर कॉल सिर्फ नेकेड कॉल अगर आप परचेज करते हैं 23,500 का, द रेंज जो बाइंग रेंज दिया है दैट इज बेसिकली 205 टू 215, करेक्ट. इन दिस केस अगर आपने सिर्फ एक कॉल परचेज किया होता, आपका परचेसिंग प्राइस होता था अबाउट 205 टू 215 बेस्ड ऑन वो थोड़ा स्प्रेड एंड आप कहाँ पे परचेज कर रहे हो. तो आउटफ्लो जो है आपका 205 का होता है, 215 का होता है. बट अगर आप एक ऊपर का सेल करोगे, इट इज बेसिकली कॉल्ड अ कॉलर स्ट्रेटेजी. कॉलर स्ट्रेटेजी में आप क्या करते हो, एक कॉल आप परचेज करते हो एंड देन वो परचेज को फाइनेंस करने के लिए आप एक ऊपर का कॉल या जो ऑप्शन आप परचेज करो वो सेल करते हो ऊपर का. सो इन दिस केस क्या किया है एनालिस्ट ने, 23,500 का कॉल परचेज किया है एंड ही हैज पेड अ प्रीमियम ऑफ 205, लेट अस से 205, करेक्ट. उसके उसको फाइनेंस करने के लिए सामने से 23,750 का कॉल सेल किया है एंड उसमें प्रीमियम कितना रिसीव हुआ है, 105. आपका नेट आउटफ्लो कितना हो गया, द डिफरेंस. सो अगर आप देखोगे यहाँ पर द मैक्स लॉस दैट यू विल बी इनकरिंग इज 2,450, बट वहीं पर सामने जो रिवॉर्ड मिल रहा है दैट इज 3,800. मतलब कैवियट हियर इज कि अगर समझिए मार्केट आज के दिन में से 23,900 या 24,000 पर क्लोज होता है, करेक्ट, यू विल बी मिसिंग ऑन दैट एडिशनल 150 200 पॉइंट्स जो भी आपको अबाउट 23,700 750 के मिला हो. सो दैट इज वन ऑफ द पिटफॉल्स, बट द मेजर बेनिफिट इज आपके हाथ से जो आउटफ्लो जा रहा है दैट इज लिमिटेड, सॉरी नॉट लिमिटेड, इट इज कंपेरेटिवली लेस. So that is why these strategies are called moderately bullish, कि हम लोग को लग रहा है कि there is a chance that the index might go higher, but then there are resistances जैसे मैंने आपको चार्ट पर भी दिखाया था 23,800 23,700. so वो जो जोन है वहां पर resistances definitely है. So that is basically a spread strategy. Now अभी मैंने आपको difference भी समझा दिया कि what would be the difference of going naked long call and a bull spread. So that's it on the strategy explanation part. अभी इसमें आपको अगर डिटेल में जानना है then what I would suggest is, because we have covered most of the introductory part of options, please do go and watch our older webinars wherein हम लोगों ने टाइम लेकर टाइम स्लॉट्स बुक करके डिटेल में स्ट्रैटेजीज एक्सप्लेन की. सो किसी को कुछ क्वेरी है, कुछ बोलना है, प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स राइट नाउ. So let's say we'll take the, I'll just give you the hypothesis example right now. This is the report which was published yesterday, that's on the bull call spread. ये report कल publish की गई थी. Now let's do the simple maths here. You can open your Excel or calculator, you can open it right now. The market will get closed by 3:30. Now let's say this report was published yesterday and we have given the call buy of 23,500 at the range of 205. Let's say you bought this call of 23,500 at 210. Okay, so अभी लॉट साइज है निफ्टी 50 का, दैट इज 25 का. कॉल बाय मैंने किया है 210 पे, कॉल सेल किया है 23,750 का एट 110 रुपीज. ओके, सो you can write it down. Basically that call buy you have done, that is of 210, call sell you have done, that is of 110. आज की डेट में जो अभी प्रीमियम चल रहा है, अभी जो लाइव प्रीमियम चल रहा है 23,500 का प्रीमियम चल रहा है 450 रुपीज. ओके, so you can write it down, that is a 450. Now if I talk about this 23,700 23,750, उसका प्रीमियम चल रहा है 263. So can you tell me that what will be the exact net profit of yours? We'll just take a 1 minute of break here and you can post your query, you can post the answers. So 23,500 का कॉल मैंने परचेज किया है कल 210 पे. आज मैंने कॉल सेल किया, कल मैंने कॉल सेल किया है 23,750 का एट 110.
Now 23,500 is trading around this 450, and 23,750 is trading around this 260. So what is your net income एक दिन के अंदर, in one day? So as you guys calculated, what we would do is we'll stop sharing the screen and okay, चलेगा. We'll I think Karan, let's yeah. means we are waiting for the some basic maths calculation. You can type your answers कि 23,500 का call you have purchased at 210 yesterday, and 23,750 का call sell किया at 110. जो अभी प्रीमियम चल रहा है that is 23,450 का, that is 23,500 का प्रीमियम चल रहा है 450. एंड कॉल्स 23,750 का प्रीमियम चल रहा है, दैट इज अराउंड 250. लेट्स टेक द राउंड फिगर 250. Superb, great, Siri. I like your participation in this webinar, and you are rightly mentioning कि कॉल बाय का प्रीमियम कितना लगा एंड कॉल सेल का, एंड जो डिफरेंस रहेगा दैट इज योर नेट प्रॉफिट राइट नाउ. Superb, great. So I think you have understood the concept very well, and I hope the other participants who are attending right now, so they have understood the concept that क्या means कैसे कॉल बायर एंड कॉल सेलर का नेट प्रॉफिट प्रीमियम कैसे निकाला जाता है. So this is the report we publish every week during the expiry, that is on Nifty 50. You can go to the simple hai accessdirect.in, and under the research section you can download the report from there. So great. Thank you everyone for continuous engagement, and thank you Karan for giving such a great insight about the Greeks first of all, which was much needed, and about the strategies. So thank you so much everyone for attending today's session, and thank you Karan, and we'll see you, that is on next Tuesday at 3:30 p.m. for the commodities webinar. And yeah, Karan, all over to you. या सो थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन. सो मैं आपको एक सजेशन दूंगा जिन लोगों को भी ग्रीक्स के बारे में थोड़ा और जानना था. देयर इज ऑलवेज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द डे दैट इज कमिंग ऑन आवर ऐप. सो टुडे वी डिड पब्लिश अबाउट डेल्टा, एंड मंडे को आपको बाकी मंडे से जो है आगे आपको बाकी ग्रीक्स भी आ जाएंगे. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, उसे पढ़िए सो दैट आने वाले वेबिनार्स में अगर उसको लेके कुछ आपको क्वेरी है देन हम लोग क्लियर कर सकते हैं. So just type yes if you are receiving the this notification related to the delta, कल intrinsic value, extrinsic value, options क्या होता है, तो ऐसा आपको like you are receiving the notifications from our side, just type yes that how you are receiving it. Thank you so much. Thank you so much for your kind words, and those who are attending this session from our WebEx channel, thank you so much all for attending the today's session. We'll see you on next Tuesday. Till then, have a great weekend, and see you. Thank you.